Yeah. So, Yajat, we are starting your session. So, you are applying for botany faculty in Aakash Byjus, right? Yes, ma'am. Okay, great. So, as you can see on the screen, my name is Mallika Pandey and I am from interview Yes, ma'am. preparation team. So, today I will take your mock session and will give you like analytical feedback. Okay. So, after this session, I Okay, will ma'am. send you other link just like after completing this session, and you have to join that link for the analysis of the feedback. Okay. Okay, sure, So, ma'am. we are starting your session. Try to answer all the questions, at least attempt it. Okay. So, all Okay, the ma'am. best. Thank you so much, ma'am. My first question to you is introduce yourself. Hello, ma'am. My name is 𝐁𝐨𝐿, and I hail from district Chamba, Himachal Pradesh. I have completed my post-graduation from DAV University in Botany Honors, and I have been teaching from past 3.5 years roughly. That's it, ma'am. What is your achievement so far? Like when you listen to the word achievement, what really comes into your mind? Ma'am, achievements, not really, ma'am, but I'm good in teaching, and I can explain anything in a good manner, ma'am. Have you achieved anything in your teaching profession? Achieve not exactly, ma'am. Like what type of achievement are you That's asking what about? I'm telling you. No? That's what I'm asking you actually. That when you listen to the word achievement, what really comes into your mind? That okay, this is my achievement. Ma'am, This really makes me satisfied, in aspect of my profession or in aspect of my academic life or something like that. Any reward you can tell. oh, For example, you have told me that for this in your question. professional life, many students you have taught, right? So, in respect of that, any achievement you feel, ki, okay, the result seems really good Yeah. for that year when I taught the students. So, likewise, any achievement you feel. Yes, ma'am. The result always makes me excited and feel satisfied when my students cleared the exam and Hmm. when my uh, Uh, interrupting this session in between, just to tell you that interview is only about discussion and to talk, right? If you are yes, ma'am. going somewhere and you want to know someone, then you will talk. So it is just a normal conversation in a very formal way. So don't get nervous, Yes, ma'am. right? There is no Sorry. judgmental thing going on in any interview. In any interview of your life, don't get nervous. It's just a talk, just a Oh, discussion. Okay, just be calm. So, my okay. second question would be tell me about your strength and weakness. Ma'am, my strengths are I'm open to anything to learn anything. I'm also very helpful to students. Hmm. Like in any way possible, I can help them. So Hmm. I put forward myself to help them. And I'm also confident and Hmm. I always work in a team, like to Hmm. work in a team. Hmm. And my weaknesses are I am I am little bit shy to ask anything for my help. Okay, I mean, shy to ask for help. I don't get it. Ma'am means I don't ask for help easily, ma'am. I try to solve the problem on my own, ma'am. Okay, okay, okay. So, what is your hobby? What you would like to do in your free time? Ma'am, reading books, singing, watching movies. Which book you That's it, have ma'am. last read? Ma'am, I usually read textbooks. I love to read them, not the novel and fiction type. Okay. Yes, ma'am. I Why want you? to gather the knowledge. Yes, ma'am. Okay. Uh, why you want to join Akash Byjus? Why not any other institute?
Ma'am, because it's a reputed institution and I want to boost my career with joining Akash, ma'am. I want to kickstart my career on another level. But that you can do with any other institute as well. LN, Resonance, FITZ, Physics Wala. There are many. But the environment in the Akash is, I think so, very good for working. But you have not been there, so how As can I you have be so read, confident? Hmm. ma'am, I have read that on the online sources Mm-hmm. about the reviews of Akash, the working culture. I read Okay. about that. Yes, Okay. ma'am. What do you know about Aakash Byjus, founder, co-founder, when it is established? Any idea about that? Uh, Not exactly, ma'am. I have to read about that. No problem. What is the challenge you see in the education system in India that you really want to change as a teacher? Ma'am, the teaching system in our schools, ma'am. Okay, likewise. The Hmm. Likewise, ma'am, the standard of the education in the school are not that much great. Hmm. That's why students have to take coaching for the competitive examination, ma'am. But you are also now will teach in a coaching institute, right? So Yes, ma'am. your answer and your passion for teaching is completely contradictory. So why you are not going to school to teach the students and to make a change? Why you want to join coaching institute then? Ma'am, I want to change the education system, but it's not in my hand. So Hmm. wherever possible, I will That's do what my I'm best. asking you, no? What is in your Yes, hands as a teacher? You have good years of experience. You were a student, now you are a teacher. Like, I think yes, ma'am. you will have the education touch, I think, for 20 to 23 years, right? We are studying from 23 since 23, 24 years. So, what is Yes, the ma'am. challenge you see since starting that you really want to change as a teacher? Now, everything is in your hands as you are a teacher. So, we cannot rely on our upper authority that okay, that is in their hands, that is not in my hands. We cannot say that, right? Yes, ma'am. As a teacher, many things are in your hands. So I really want to ask, what is the change that you want to emphasize as a teacher? Ma'am, I want to change the teaching methodology of the Hmm. uh, different type of teachers, ma'am. The teacher are only teaching the things that are written in the books. They are not Hmm. practically giving the examples or anything. So I want to Hmm. inspire them also by showing Hmm. my teaching skills, ma'am, so that student can understand very easily in the classroom only. They don't have to read or cram the things. Tell me one example of the topic that you would teach in a different way in respect of other teachers. Ma'am, for example, if I have to teach the topic cell, Hmm. so I would rather give the example of the real life. Like we all always heard that the cell is the same as the structure of honeycomb, but that we show the structure of honeycomb only in the books. So I will bring the honeycomb into the reality to the classroom, ma'am. How would you convince a student who is least interested in your subject? Because, as you know, botany is really a monotonous subject for major students, Yes, ma'am. right? So, how would you convince a student so that your result in a coaching institute would not distract? Okay, ma'am. Same, ma'am. I'll make my teaching skills Hmm. more interesting by giving the example of real life, by Hmm. entertaining the students little bit in the lecture, Hmm. in between the lecture, so that they don't get bored in the lecture. Quote one example That's, apart from the cell topic. mm, for example, ma'am, we can take the real plants to the class so that we can show them their anatomy, their morphology.
so that the students can take more interest in the lecture apart from the book's diagram. Okay, Yajat. Yes, Yajat, ma'am. now you can proceed to your demo part. You have 5 to 6 minutes. Okay, start with your demo. Okay. Hmm. I'm muting myself. You can anyways proceed. If I found any issue, I will tell you. Okay, मैम मैम बाइलिंगुअल में दे सकता हूँ कोई चक्कर तो नहीं? Sure, sure. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Hello, everyone. My name is Yajat, and today I'm going to teach you the topic that is cell division. सेल डिवीजन में भी हम पर्टिकुलरली क्या पढ़ेंगे आज? बेसिक्स ऑफ सेल डिवीजन और बेसिक्स ऑफ सेल, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द phases of cell cycle. सेल डिवीजन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है. आई एम श्योर आपने अपनी बचपन से एक लाइन सुनी होगी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लाइफ. तो इस लाइन का क्या मतलब है? सभी ये लाइन पढ़ा तो देते हैं, मतलब मैं आपको समझाता हूँ. सेल इज द बेसिक. बेसिक मीन्स कि जो उसका फाउंडेशन है वो कोई भी चीज, जैसे इंडिविजुअल मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी फाउंडेशन क्या है? सेल. सेल इज अ स्ट्रक्चर. जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. वो स्ट्रक्चर किससे बना है? सेल से बना है. फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे नर्व सेल है, वो आपको सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा वन प्लेस टू अनदर. एंड सेकेंड एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं यहाँ पे हार्ट सेल का. जो हार्ट सेल है वो हार्ट की पंपिंग में हेल्प करते हैं. आई एम श्योर आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा बुक्स में. अगर आपने रियल लाइफ का एग्जांपल मैं आपको कोट करके बताऊं यहाँ पे, तो आप सबने कंस्ट्रक्शन साइट तो हम श्योर सबने देखी होगी. वहां पे आपने ब्रिक्स का स्ट्रक्चर देखा होगा. तो ब्रिक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की लेयरिंग में होता है. अगर ये लेयर बाय लेयर होती है तो यहाँ पे एक एक जो कंपार्टमेंट बना है, ये जो आप कंपार्टमेंट देख सकते हो, ये एज ए रिप्रेजेंट करता है सेल का. और आपने एक एग्जांपल और सुना होगा हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर का. हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है. मैं आपको अभी रियल लाइफ का एग्जांपल भी दिखाऊंगा हनी कॉम्ब का. इस टाइप का स्ट्रक्चर आप हनी कॉम्ब में देखते हैं. ये जो कंपार्टमेंट्स बने हैं, ये भी सेल रिप्रेजेंट करते हैं. लेट मी शो यू वंस. दिस इज द हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर. आई एम श्योर दिस इज विजिबल टू यू. These brown, dark brown parts are representing the compartments जो कि सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे इसमें अभी मैंने आपको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाया है, उसमें ये कंपार्टमेंट्स बने थे. इसको हम सेल रिप्रेजेंट करेंगे. अब आप बोलोगे सर इसका नाम सेल ही क्यों रखा, हम इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे. तो इसकी डिस्कवरी एज यू नो इंडिया के बाहर हुई है. तो आपने फॉरेन मूवीज में सुना होगा कि जो प्रिजन होती है, प्रिजन भी ऐसे ब्लॉक्स ब्लॉक्स में होती है, कंपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट. हम उसको फॉरेन मूवीज में क्या सुनते हैं? हम उसको बोलते हैं सेल. तो उसकी डिस्कवरी फॉरेन में हुई है, इसी वजह से उसका नाम सेल पड़ा हुआ है. तो सेल हमें एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो लाइफ का है वो हमें समझ आ चुका है. तो हम मूव फर्दर करेंगे सेल डिवीजन की तरफ. सेल डिवीजन क्या होती है? अब सेल डिवीजन जो है वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है. सीक्वेंशियल प्रोसेस का क्या मतलब है? ये ऑर्डर प्रोसेस है. एक स्टेप होगा पहले, उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा. अब ऐसा तो नहीं है जब हम पैदा होते हैं तो हम पहले 1 साल के होते हैं, फिर 2 साल के होते हैं. अब ऐसा तो नहीं होता कि हम डायरेक्ट 100 साल के हो जाते हैं, फिर उसके बाद 50 के हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता ना. कोई भी चीज है वो एक ऑर्डर में चलती है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड प्रोसेस. हम श्योर आपके घर पे भी आपके मॉम डैड होंगे, आपको ऑर्डर करते होंगे, बेटा अब खाना खा लो, अब पढ़ने बैठ जाओ, अब ये काम कर दो. तो आपको कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो एक स्पेसिफिक कोई इंसान है जो आपको ऑर्डर दे रहा है. सेल के केस में वो इंसान कौन है? गेस करो. मैं आपको बताता हूँ. सेल के केस में वो है डीएनए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल ऑर्डर करेगा सेल को कि चल भाई अब तैयार हो जा, अब तेरी सेल डिवीजन का टाइम आ चुका है. और सेल डिवीजन जो है वो डीएनए किसके थ्रू करवाता है? प्रोटीन्स के थ्रू. यहाँ पे हमारे प्रोटीन्स की हेल्प से सेल डिवीजन होती है. प्रोटीन्स में भी बेसिकली दो प्रोटीन्स हमारे हेल्प करते हैं. फर्स्ट इज साइक्लिन प्रोटीन, सेकेंड इज सीडीके. सीडीके इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस. Yajat, please stop. यस Now, मैम. please explain transpiration. Transpiration. Ma'am, transpiration is the exchange, it's a method of exchange of gases. इसमें क्या होता है कि
जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो प्लांट्स रूट्स के थ्रू अपने लीव्स से बाहर निकाल देता है मैम। You have to teach transpiration topic for like 5 to 6 minutes to the student. You can't explain like this, right? For अच्छा, a मुझे लगा मैम layman आपने जनरली person. पूछा कि No, no, ट्रांसपीरेशन क्या no. I होती है। just want you to present transpiration as a topic. ओके, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन बेसिकली हमारी लीव्स के थ्रू होती है। लीव्स में भी बेसिकली जो ट्रांसपीरेशन होती है वो स्टोमेटा से होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा रूट से जो है प्लांट वो एक्सेस वाटर सक करता है, सॉरी, रूट से प्लांट जो है वो वाटर सक करता है। जो प्लांट में एक्सेस वाटर होता है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव से बाहर निकल जाता है। तो इसी उसकी वजह से क्या होता है, हमारे लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे? जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का होता है। जो स्टोमेटा होते हैं एक डंबल शेप होते हैं, और एक, फर्स्ट इज डंबल शेप, सेकंड इज किडनी शेप। ये दो टाइप के यहाँ पे स्टोमेटा हमारे पास होते हैं। जितना भी एक्सेस वाटर है ये स्टोमेटा जब ओपन होते हैं, अलग अलग कंडीशंस है उसमें स्टोमेटा ओपन होंगे और यहाँ से वाटर वेपर्स की फॉर्म में गैसेस एक्सचेंज होंगी। गैसेस हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लस वाटर, और हमसे वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं प्लांट्स अपने अंदर। तो ये जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो सारा स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक तो जो ट्रांसपीरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होगी, एक आपके लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में। स्टेम्स की आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बाक बोलते हैं। बाक के आसपास यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ओपनिंग्स होती है, बेसिकली पोर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। ये भी आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। दैट्स इट मैम। Okay. Now I will ask you few questions of your demo topic only. My first question ओके is, मैम। what are the main phases of the cell cycle and how is the cell division related to these phases? Before answering, please confirm that you should be very precise with your answer. Just explain the concept. Don't explain like you are writing anything. Getting my point? ओके मैम, Yeah. विदाउट यूजिंग दिस टैब। You can use tab, but don't be very much theoretical, you know. Just be stick to the ओके concept. मैम, दो मेन फेजेस हैं सेल Hmm. साइकिल में। फर्स्ट Hmm. इज इंटरफेज, सेकंड इज एम फेज। एम Okay, फेज good. बेसिकली माइटोटिक फेज हो सकता है या मियोटिक फेज हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल टू सेल। जो Hmm. इंटरफेज है उसके स्पेलिंग ही बता रहे हैं, इंटरफेज सबसे बड़ा फेज होता है। मींस Hmm. 95% ऑफ टाइम जो है वो इंटरफेज ले लेता है हमारा। और Hmm. जो वो टाइम यूज कर रहा है उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। और जो हमारा एम फेज है वो ओनली 5% ऑफ टाइम यूज करता है मैम। और इंटरफेज भी फर्दर डिफरेंट फेजेस में डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज एंड टीलो फेज। ये फेजेस होने के बाद हमारी जो Hmm. सेल है वो सेल डिवीजन की तरफ बढ़ता है और वो एम फेज में चला जाता है। एम फेज में भी बेसिकली कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती है मैम। ये डिफरेंट फेजेस है। My next question is, describe the process of cytokinesis in animal cells. How does the contractile ring form and function in cell division? And what is its role in separating daughter cells? ओके, इन एनिमल सेल। Yes. ओके मैम, इन एनिमल If you सेल want me to द, bifurcate the question, you can note down on your board and you can answer one by one because this question has three parts, right? ओके मैम। Firstly, describe the process of cytokinesis in animal cells. Okay. And ओके second, मैम। how does the contractile ring form and function in cell division? Okay. And what is its role in कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। separating daughter cells? ठीक है मैम। Oh, now answer one by one. साइटोकाइनेसिस मैम एनिमल्स के केस में सेंट्रीफ्यूगल वे में होता है। मतलब अंदर से सेल फरो बनती है और वो बाहर की तरफ चलती है, और मैम वो Okay. उसको सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देती है। और मैम वो
जो रिंग बनता है पूरा उसको हम सेल फरो बोलते हैं। Okay. And what is its role? I think you have not mentioned the role. मैम डिवाइडिंग द डॉटर सेल मैम। Okay. My next question is describe the process of cell elongation in plant growth. मैम लाइक कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? Sure. Describe the process of cell elongation in plant growth. ओके मैम, सेल इलॉन्ग हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन Hmm. और साइटोकाइनिन। मैम ये दोनों प्लांट सेल डिवीजन और सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करते हैं मैम। और इससे प्लांट की मैम गर्थ भी इंक्रीज होती है और हाइट भी इंक्रीज होती है मैम। Okay. Discuss the role of Pleiadi. I think I am if pronouncing it wrong. You can प्लॉइडी, प्लॉइडी लेवल, यस मैम। Pleiadi. Yeah, you got it now. Discuss the यस मैम। role of ploidy in plant development. How do different levels of ploidy, such as diploid, triploid, and tetraploid, influence cell division and growth in plants? ओके Hmm. मैम, प्लॉइडी इज लाइक मैम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेंट मैम। Okay. और मैम हेप्लॉइड में जो होता है वो प्लॉइडी लेवल एन रहता है, और डिप्लॉइड में 2n हो जाता है। और आपने ट्रिप्लॉइड बोला, वो हम केस देखते हैं मैम Tetraploid. टेट्राप्लॉइड। Hmm. टेट्राप्लॉइड तो मैम मेरे हिसाब से शायद मुझे एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आ रहा। ट्रिप्लॉइड में बता सकता हूँ, जो Hmm. कोकोनट में होता है मैम। Okay. ठीक है. My जो उसका next. एंडोस्पर्म होता है वो मैम ट्रिप्लॉइड होता है मैम, कोकोनट का। Okay. ठीक है. यस मैम। My next question is describe the phenomena of endomitosis and its significance in cell division. How does endomitosis differ from regular mitosis and what are its consequences? सॉरी मैम, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दिस क्वेश्चन। Okay. Discuss the role of apoptosis in plant development and response to stress. सॉरी मैम। Explain the concept of holocentric chromosomes and their role in plant cell division. होलोसेंट्रिक। Just attempt it once. Next question would be discuss the concept of mitotic spindle assembly checkpoints during mitosis. मैम टू टाइप्स के चेक पॉइंट होते हैं। एक मेजर Hmm. चेक पॉइंट होता है, एक माइनर चेक Hmm. पॉइंट होता है सेल Hmm. साइकिल में। एक मैम G1 और S फेज के बीच में होता है, Hmm. और सेकंड होता है मैम आपका G2 और M फेज के बीच में। मैम जो Hmm. मेजर चेक पॉइंट है, अगर सेल उसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो वो क्विसेंट स्टेज में चल जाता है, क्यू नॉट स्टेज में मैम। Hmm. तो उसकी सेल साइकिल जो है वो मैम इनहिबिट हो जाती है, मतलब खत्म रुक जाती है उस टाइम के लिए। और अगर सेल चाहे तो उसको दोबारा शुरू भी कर सकते हैं, अगर उसको उस सेल की जरूरत पड़ेगी दोबारा। Okay. Explain the significance of chromosome condensation in mitosis and meiosis. क्रोमोसोम कंडेंसेशन मैम, क्रोमोसोम कंडेंसेशन में क्या होता है कि मैम बेसिकली वो क्रोमोसोम कंडेंस होके क्रोमेटिड्स की शेप लेते हैं, और आगे जेनेटिक मटेरियल की स्टोरेज में हेल्प होती है मैम उसमें। Okay. थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए आप इसको. माइटोसिस और मेयोसिस में क्रोमोसोम इंडिविजुअली. कंडेंसेशन को माइटोसिस और मेयोसिस में इंडिविजुअली. इंडिविजुअली मैम कंडेंसेशन सेम ही होती है आई गेस। आर यू श्योर? डिफरेंट नहीं होता उसमें कुछ भी। ओके. मैम Describe the process of endo reduplication in plant cells and its consequence for cellular morphology. नो आइडिया। Just attempt it once. थोड़ा सा आप सोचो तो कर देती हूँ. Describe the process of endo reduplication. पहले ये आप बताइए. इंटरडिप्लिकेशन नहीं आ रहा मैम दिमाग में। कोई बात नहीं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट रिसर्च। साइटोजेनेटिक्स में हम एक मिनट टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। मैम, ये बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करती है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, सिर्फ इतना कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। श्योर श्योर श्योर, वन सेकेंड। हाँ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट रिसर्च। ओके मैम, साइटोजेनेटिक्स में जैसे ये हेल्प करती है वेरिएशंस में जेनेटिक्स में हमारी। मैम, हम्म जब क्रॉसिंग ओवर होती है सेल हम्म साइकिल में, तो ये हम्म जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करता है मैम। तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आती हैं। अगर हम कोई अपना डिजायर्ड डीएनए डालना चाहें उसमें, तो वो भी डाल सकते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू मैम। ओके, my next question is, discuss the concept of cancerous growth in plant tissues। मैम, जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो मैम वो कैंसरस ग्रोथ में रिजल्ट करती है, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है वहां पे और Mhm. प्लांट को अफेक्ट करता है मैम। How can plant cells exhibit uncontrolled division? मैम, बाय डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स मैम। Like, They can check on the division of the cell, like cyclin proteins and cyclin dependent kinases. ओके, ठीक है, अभी मैं आपसे थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी बायोलॉजी के। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। Okay, okay मैम। सॉरी मैम, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। रिपीट करना मैम। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड ब्लड ओके ग्रुप्स। हम्म मैम, blood is the connective tissue, हम्म uh, and blood groups are the different type of antigens present in the blood. ओके, Combination of antigen and antibodies मैम। Sorry. ओके, डिफाइन एसेसरी पिगमेंट्स, state their significance in photosynthesis। Accessory pigments also help in the photosynthesis, apart from chlorophyll A, B, and C, ओके like xanthophyll, phycoxanthin, and carotene. ओके, can green plants kept in dark with proper ventilation carry out photosynthesis? Captain Dark, Hmm. ma'am, only dark reaction will occur only, not the Okay. light reaction. Okay. Uh, my next question is, what is the relationship between photosynthesis and respiration? फोटोसिंथेसिस में मैम फूड बनता है और रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है मैम फूड का, Okay. Does कॉम्प्लेक्स moonlight फूड का। promote photosynthesis? मूनलाइट मैम, अप टू सम एक्सटेंट। Okay. Does photosynthesis occur in leaves only? यस मैम। Okay. Explain the role of water in photosynthesis. वाटर मैम, इट्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। That's it. नो मैम। Okay. Uh, my next question would be, what is the difference between gram positive and gram negative bacteria? मैम, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर categorized on the basis of the pigment they attain. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है मैम, वो पिगमेंट डार्क पिगमेंट ले लेते हैं क्योंकि उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो थिक होती है। और जो ग्राम नेगेटिव है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है वो थिन होती है, इस वजह से वो रिटेन नहीं कर पाते मैम कलर।
Okay. My next question would be, why should we hire you, Yajat? Ma'am, because I am a talented teacher and I'll give my best to explain the things to the student and I'll help the students up to my Hmm. last extent, ma'am. Okay. If there is any other candidate who is more experienced than you, right? Whom should we hire and why? Yes, ma'am. Ma'am, I would say you can hire me, ma'am. Why? Ma'am, because I'll give my best to prove my Hmm. candidature to you. Okay. Yajat, you can leave this meeting. I'm sending you other link for the feedback analysis. Okay? Okay, thank you, ma'am.